वैसे सारे जीव जो जो भौतिक दुनिया में मौजूद हैं या मौजूद नहीं है कहीं और दुनिया में, उनकी गिनती 84 लाख योनि में की जाती। So, Brahma being the ideal, the first jiva who has been ordered to populate the whole world with different kinds of species of life, in their previous lifetime, before their annihilation of the body, they have to be restored in a new day of Brahma. The Brahma being the original Prapitama, Pitamaha. Krishna says, I am the Prapitama, not Brahma. Brahma is Pitama, the great sire of the progenitor. So, being the first jiva, he has been given to restore all these living entities who lost their bodily conception, but they were in their subtle conception of mind, buddhi, mind, intelligence, and ego. That was the status, but they have to be given appropriate bodies. So, Brahma is not considered to be the original creator, but one who is putting variegatedness in the creation. तो भगवान आदि करता है, भगवान ने सारी दुनिया रची है, तो भगवान ने सारे जीव भी पैदा किए हैं। वैसे जीव अलग हुए हैं, लेकिन भौतिक दुनिया में पैदा हुए माने जाते। जिनको भौतिक शरीर है, तो सारे ब्रह्मा की संतान है। 84 लाख योनियां बताई जाती है। यहाँ अपने साइंटिस्टों को तो 20 लाख से ज्यादा योनियां नहीं प्राप्त हो। पापा न्यू गिनी के जंगल में हर साल नई नई प्रजातियां दिखाई दी, जो ढूंढ नहीं पाते। जो भी है, अपने ब्रह्मांड में नहीं तो बहुत सारे ब्रह्मांड है, इनमें भी बहुत सारी जातियां प्रजातियां होती है। तो ब्रह्मा की जिम्मेदारी है कि सभी जीवों को योग्य शरीर प्रदान करें, और ये शरीर प्रजनन करने की ताकत बताता है, यानी कि प्रजा पैदा करना। प्रजा पैदा करना आसान काम नहीं है। ब्रह्मा जी को काफी पर्चा हो गया, पहले ही 4 मानस पुत्र पैदा किए। वो कह रहे हैं कि तो ब्रह्मचारी ही रहना है, शादी नहीं करनी है। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि पहला ही मेरा वचन का जो उदाहरण करने वाला, तो ये 4 ब्रह्मचारी है। तो गुस्से में आ गए, क्योंकि रजोगुण जब संतोष नहीं पाता तब गुस्सा आता है। हमारे जीवन में भी कितना खतरा होता है, तो रजोगुण का कारण। तो ब्रह्मा जी तो रजोगुण नायक बताते हैं, वो भी कभी कभी फंस जाते हैं। तो प्रजा करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी जिम्मेदारी ज्यादा। Being the first progenitor, Brahma had great responsibility. It's not just to give them appropriate bodies. 8.4 million species of life. You may not find everything here, but there are multitude of bigger universes also. So, logically, it is not a question that because we do not know or we have limited senses or our universe is smallest,
Why it is smallest? Our Brahma had only 4 heads. There are millions of heads of Brahmas and that many times bigger universe than us. You haven't read Krishna book? No. Read the story. The story is like that. Krishna called all the Brahmas to have a meeting. They are also like GBCs. So they have a meeting in Dwarka. So our Brahma went first because he's the nearest one. So the gatekeeper stopped them. Give your identity. He said, identity? What is this? Tell Krishna I'm Brahma. That should be good enough. So the gatekeepers went and requested that there is a mark coming to see. We allow them. Krishna asked, which Brahma is it? And that was Brahma. Our Brahma was questioned by Baba, which Brahma are you? Brahma was, but I do not know myself which Brahma. So he tried to scratch all his foreheads. And he got an idea. Tell, I'm a four-headed Brahma. And the Jupiter went and said, four-headed Brahma has come. Krishna said, oh, okay, let him come, let him come. So, this Brahma was so much perplexed. He straightly asked, my dear Lord, you do not know me? I am Brahma. That was not enough for you to understand. It's not a big question because I have called meetings, so who comes first? It depends. Oh, is that so? There are other Brahmas also. Yes, there are bigger universes, so there are bigger Brahmas than you. So soon other Brahmas started coming. Some has 10 heads, some has 100 heads, some has 1,000 heads, some has millions of heads. And our Brahma said, oh my God, I don't know what. So he understood, right? But this is a Krishna book. You read the story. So, ये ब्रह्मा जी की कहानी है. ब्रह्मा अपने आप को काफी कुछ समझता था कि पहला जीव है, उसमें ज्यादा अहंकार भी होता है. तो ब्रह्मा जी भगवान को द्वारका मिलने जाते हैं. भगवान ने बुलाया होगा, कोई काम है. तो ब्रह्मा जी गए तो द्वारपाल ने रोका तो भैया अब कौन, तो जानता नहीं हम ब्रह्मा हैं, तो जाओ भगवान को कहो ब्रह्मा है. कृष्ण भगवान ने पूछा भाई कौन सा ब्रह्मा है, कहाँ का ब्रह्मा है? वो बार बार वापस आए कि भाई आप कौन सा ब्रह्मा, कहाँ के हो? सोच में पड़ गए कि क्या कोई और भी ब्रह्मा है क्या? उसके तो दिमाग में था ही नहीं. तो अपने चार मत्थे पर खुजली कर दे देखा, कुछ नहीं समझ पड़ता तो कह दिया कि चार वाला ब्रह्मा आया. द्वारपाल फिर से गए तो भगवान ने स्वीकार कर लिया. ओह ठीक है,
बुलाओ जाओ चार मत्थे वाला ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में जो कुतूहल पैदा था वो तो कैसे है समझा पाए। उन्होंने तुरंत कहा भगवान आपने क्यों कहा ऐसा कि कौन सा ब्रह्मा है, कोई अलग दूसरे हैं? तो भगवान कहते हैं अभी सब आते होंगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी का चार मत्थे का जो अहंकार है तो वहां पिघल गया। बड़े बड़े ब्रह्मांड होते हैं, अपना तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें चार मत्था वाला ही है। दूसरे बड़े ब्रह्मांड में 10, 20, 100 मत्थे वाले, 1000 मत्थे वाले ब्रह्मांड आने लगे और भगवान के सामने सब नस 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 और नस मस्तक होना यानी कि अहंकार मिटाना। इसलिए हम दंडवत करते हैं ब्रह्मा जी ने सिखाया। तो इसी तरह ब्रह्मा का अहंकार मिटना चाहिए और भगवान की सेवा के लिए हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, और माता पिता बन जाने से अपने आप को क्या बड़ाई मानने लगते हैं। हाँ? लेकिन भगवान का काम करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रजापति बनाया तो ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा के माध्यम द्वारा मनुष्य को पैदा किया और वही प्रजापति बनने का आदेश दिया। तो भगवान की कृति के लिए आदेश का पालन करना होता है, नहीं कि अपने मन माने ढंग से हम जब चाहे तब प्रजोत्पत्ति कर सकते हैं। प्रजोत्पत्ति ऐसी सरल नहीं है, परेशान करने वाली बात है। यदि अहंकार करने वाला जो जीव है तो उसे तो पूरा सबक मिलना चाहिए। पिता हुआ तो क्या, पशु भी पिता हो सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने बच्चों के लालन पालन के लिए सब सारी शिक्षा देते हैं। अपना अहंकार में जब कमाई करने आता है तो घर में रोक जमाता है, मैं वाली को मैं। तो ये आदर्शता तो है ही नहीं। आदर्श गृहस्थाश्रम में जो आवश्यक भगवान का आदेश पालन करने की व्यवस्था है उसके बारे में हमें कोई शिक्षा नहीं देता। वो शिक्षा बहुत आवश्यक है। So when Brahma got his lessons, he has to subdue his false ego. He thinks he is the progenitor, doesn't mean he is all and soul. A progenitor has so many diversified functions, and that to obey the command of Lord Krishna. He is divine. How to run after producing, how to run household, that Brahma should give the instruction. Now, when Brahma started with 4 Kumaras and was disappointed, all the children in future, they are going to be disappointment for their parents. It's not a pride, it's not a laughing joke. The better watch out. You will be also in turn have to become the child. Then your false ego will go away. Let's see. When Brahma became angry because of his failure, very first attempt and then also failure, the 4 Kumaras denied him. Father, you teach us something which is very pleasing to Lord.
We don't want to enter into this complicated lifestyle of a growth. We will become brahmachari and we are born liberated. So why do you want to dump us into the entanglement of Grihastha Ashram? So Brahma became angry. Like, you are the cause of my failure. But out of anger, Rudra came out crying. And Rudra said, Father, Father, tell me, what am I supposed to do? And Brahma said, go and become Prajapati. Go and become Prajapati. So Rudra expanded himself into 11 Rudras. And then all became Prajapati. And their Prajas are called Bhairavas. They are very dangerous looking, and they are no friends of anybody. Because their mode of begetting the Prajas, they were ignorant. The mode of ignorance is prevailing. Only Lord Shiva can control. But he cannot control them because they were fighting with the children or the Prajas of Rishis. There were 7 rishis. Out of that, Karda Muni I was talking, the best of all. So Brahma said, oh, okay, there is trouble. You can't increase the population because the Bhairavas were devouring the children of rishis. So Brahma called, this is not the way either. So Brahma called back, Shivji, I don't want you to become Prajapati. Go and meditate in jungle, the Supreme Lord. And Lord Shiva said, okay, Pitaji, I will do. So since then, you will see Lord Shiva always wearing Yoga the skin of the deer, and he is completely aloof from the material things. He is chanting his new Sankarshan mantra, and Lord Shiva was transformed. From Sankarshan became Shankar. Right? So Lord Shiva's position is very unique. Nobody can compete. That is Shiva Shakti. Right? But Lord Shiva stopped begetting children and retired because his father Brahma told, go in the jungle and meditate on Supreme, your own origin. So since then, you will see Lord Shiva always in charcoal. Even though when he got married with Daksha Kanya, Daksha was telling him gently because he was not wearing good clothes. He was not representable in the assembly of other senior demigods and other. So they don't understand the purpose of being a householder. The status quo of Daksha Prajapati was so much that he was marrying 9 daughters of Karda Muni. So many. And Prasuti was the name of his wife. Okay. Akuti, Prasuti, and Devahuti. So Prasuti was the first daughter of Manu Maharaj. Okay. And then they married to other 9 rishis who are under Daksha Prajapati.
The story goes like that. This is how Daksh means expert in begetting children. Unrestricted. Even Muslims cannot compete. Yeah. Daksha Prajapati, expert in begetting children. You have some record in Arab countries, they have a big harem, and they stopped counting how many children they have. But they maintained. So a similar thing in Morocco. They want to populate the world and make everybody Muslim. But when they hear our Lord Shiva's story, they get the lesson. They are afraid of Lord Shiva because in Makkah, Shiva Ling is there. They revere Lord Shiva. But anyway, Daksha Prajapati के साथ मनु महाराज की प्रसूति नामक पहली बेटी थी, उसके साथ ब्याह कराया था, और उसने कितने सारे बच्चे पैदा किए। तब से प्रसूति नाम डिलीवरी को कहते हैं। इनकी डिलीवरी प्रसूति हो गई। तब प्रसूति तो नाम है इसका, दूसरी आकुति नाम है जो अंगिरा मुनि के साथ ब्याह हुई, और तीसरी देवहूति कर्दम मुनि के साथ ब्याह गई। तो उसकी स्टोरी अब करेंगे। उसकी कहानी बहुत आदर्श गृहस्थाश्रम के लिए है। कर्दम मुनि भारी तपस्वी थे, सन्यासी से भी ऊपर, और उन्होंने साक्षात्कार भगवान का किया था। भगवान को हमेशा अपने हृदय में ही विराजमान रखते थे। और कर्दम मुनि विशुद्ध भक्त भी थे, लेकिन तपश्चर्या उस समय की बात है जो सतयुग का समय, तपश्चर्या से लोग अपना जीवन शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान ने दर्शन दिए उसे, कहने लगे कर्दम मैं तेरे यहाँ बेटे के कर्दम मुनि विशुद्ध भक्ति में थे, और भगवान को कहा अवश्य आपकी इच्छा तो वहन करने का हर एक का एकमात्र कर्तव्य है, मैं क्यों मना करूं? चाहे मैं सन्यासी हूं, फिर भी जब आप आने वाले हैं तब मैं गृहस्थ जीवन भी स्वीकार कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन प्रजा पैदा करने के बाद में फिर से सन्यास ग्रहण कर। कर्दम मुनि ये पवित्रता और भगवान का आशीर्वाद इत्यादि नारद मुनि को पकड़, प्रसूति और आकुति का तो ब्याह हो गया, अब ये देवहूति ही बाकी थी। तो जब नारद मुनि ने सोचा देवहूति बहुत अक्लमंद है, उसके लिए कर्दम मुनि
बहुत बड़े ऋषि होने के बावजूद भी आदर्श गृहस्थाश्रम स्थापने के लिए वो राजी थे। तो कर्दम मुनि के बाद देवहूति को गले में उतार दी। देवहूति अपने पिता के पास, मनु महाराज के पास जाती है और कहने लगे, पिताजी यदि मेरा ब्याह कराना है तो ये कर्दम मुनि के साथ ही करो, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ बन जाएगा। देखो कितनी चालाक है। पिता भी समझ गए क्योंकि जानते थे कि कर्दम मुनि कौन, वो तुरंत मंजूर देते थे। किसी ने देखा नहीं कर्दम मुनि को, न तो देवहूति ने देखा है। देवहूति ने तो सिर्फ नारद मुनि का सुनने से ही निश्चय कर दिया। देखो ठीक ढंग से सुनने से कितना लाभ है। जो सुना ना सुना कर देता है, अपनी मनमानी करना चाहता है तो वो फंसते हैं, वो फंसते हैं, अवश्य फंसते हैं। सभी तैयार हो गए। शत्रुघ्न ने सारा सामान इकट्ठा कर दिया, चलो जाते हैं तो तुरंत ही वही शादी करा देंगे और फ्री हो जाएंगे। तो मनु महाराज सारे जगत के महाराज थे, वो आए कर्दम मुनि की झोपड़ी में। कर्दम मुनि ध्यान में थे, थोड़ी देर राह देखी, उन्होंने भी देखा कि इनको डिस्टर्ब तो नहीं करना। फिर भी ये सब बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तब कर्दम मुनि करते उन्होंने देखा कि मनु और शत्रुघ्न आए, वो शुद्ध व्यवहार किया है। आने का कारण पूछा तो महाराज हमारी बेटी देवहूति के लिए उन्हें सिफारिश करें, क्या इनके लिए योग्य हो, आप देवहूति के लिए योग्य हो। आप से प्रार्थना है कि आप देवहूति का पानी ग्रहण करो। पानी ग्रहण करना यानी उनके साथ शादी करो। कर्दम मुनि ने वो शर्त रखी, एक प्रजा पैदा होते वो बड़ी होती है, चलो तो वहां तक थोड़ी राह के बाद में हम फिर से संन्यास ले लेंगे। उस समय भगवान इनके बेटे के रूप में आने वाले थे, उसकी किसी ने बात नहीं की। और कर्दम मुनि भी वैसे भगवान को तो भूलते ही नहीं, फिर भी ये मौका है, शायद यही माध्यम है क्योंकि वो भी आएंगे। ब्याह कराते हैं, धूमधाम से शादी भी कराई। देवहूति को दहेज में देना पड़ा क्योंकि कर्दम मुनि तो ठट गोपाल है, उनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, तपोबल से तो बहुत प्राप्त होता। फिर भी एक बेटी के स्नेह के लिए उन्होंने दिया। कर्दम मुनि ये लोग जब विदाई हो गए तब फिर से ध्यान धरने बैठ गए। इनको पता ही नहीं चला कि कितना ध्यान करना है, कितना देवहूति का क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे ही भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। देवहूति ने तब तक उनकी जो सेवा की है
बिना बोले चाले कुछ भी किए, तो ये सेवा अति उत्कृष्ट है। उसने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखा। पति के कर्तव्य में जो सहायक, वो आदर्शता का नियम में आता है। अपनी सहायक जब ज्ञान टूटा तो देवहूति की दशा थोड़ी बुरी हो गई। ये दुबली पतली हो गई, बाल भी जटा वाले हो गए, तेज भी नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं। तो कर्दम मुनि पूछने लगे, तो कौन यहाँ क्या कर रहे? तो बेचारे शर्मा गए। शीलन, यानी शर्मिंदा होना बहुत एक पतिव्रता स्त्री का आभूषण कहलाता है। सामने जवाब देने वाली नहीं होती आजकल। That is the character that we have to understand. We are talking about Karda Muni. Was so much absorbed in the meditation of Lord Krishna. And Lord Krishna told him that he wants to become his son. तो कर्दम मुनि ने तो हाँ तो कह दी भगवान को। कर्दम मुनि said yes, but as soon as the child grows, they will go again into meditation, because generally the son takes care of the mother. So that was the rule. So did I speak in English or Hindi before? Hindi. Now it is Hindi term. No, that's okay. But what I'm my attention diverted. Did I speak? Hindi. You spoke in Hindi for some time. पहले हिंदी बोला ना, कर्दम मुनि की बात अभी इंग्लिश में करूँगा। All right. Okay माता, हिंदी में तुम लेट आई है। So Karda Muni, approved. Yes, my dear Lord, I can do anything for you. For a devotee to fulfill the desire of the Lord is the only duty. So he will do anyway. So he was like a sannyasi, and now he has to go back to Grihastha Ashram. But for the pleasure of the Lord, he can do it. All right. So this fact that the Lord wants to come as his son became very much alert Narad Muni. Narad Muni was thinking that this is the best opportunity to get Karda Muni married with Devabhuti, the third daughter. The first two daughters are Prasuti and Akuti. Prasuti got married to Daksha Prajapati and Akuti to Angira Muni. So in this way, the rishis get the best and their progeny will be proliferating, right? But Narad Muni is also very, very tricky. Just to teach Daksha lesson, he
he took away 1,000 sons of Daksha and made them prisoners. And Daksha was so much, Upset. infuriated that how come you are a sannyasi, how come you are interfering in the matters of householders? Right? I'll give you a curse. You can stay at one place for 3 days. And I'm staying for 6 days. But anyway, otherwise you will cry. I don't know. 3 days will be enough for you. No. So, Narad Muni knew that the Lord wants to come as the son of Kardamuni. He went to Devhuti immediately. Devhuti, I got somebody for you very appropriate to your caliber. And she was told by Narad Muni about Kardamuni. And he also told the secret that the Lord wants to appear as his son. She's not married yet. So she went to her father Manu Maharaj and told Manu, Father, please, if you want to get me married, here is the candidate. Very appropriate. And Manu agreed. So he came ready-made, prepared, without any invitation. This is the first marriage that is happening by the will of the Lord, where devotees are involved. They can screw up any kind of methodology that you have to go and approach. The boy goes, not boy goes, but the boy's family goes to the girl's family and it goes back for the girls. Okay, let's see the boy, and the boy has to come, and then if they agree, okay. Otherwise, disagreement. Right on the because the boy demands Dahej क्या होता है dowry. Boy's family demands. Yes, there is some capable person is there. Yes. But today the dowry system is still prevailing in India and elsewhere also. And it is virtually a very practicidal business. Either they kill the boy and the girl together, or the girl family is going simply for some amount of money, and that to in gold only. It's very prevalent in certain states in Kerala. Even it is permeating the voting. You better believe. So we are like Narad Muni. We have to negotiate and slap it. Got an experience, Maharaj. That's correct. So Manu Maharaj came prepared to come to Muni's hut, and he was meditating. He got up in meditation and then received them and asked them the purpose of their arrival. And Manu Maharaj, without any publicity, told straightforward. And my daughter, Devhuti, is very capable. And we thought she is very fit to serve you. And that's about it. We request you, please
marry. And because this is Manu Maharaj, Kardamani also respected him. So without any doubt, or any other complications, because he was a sadhu, and cannot go into any such details. So then he accepted. And after getting married, he went into meditation and didn't care who is there with him and whatnot. But when his meditation broke, he saw one very thinned out girl with the hair like matted hair, and the eyes were deep in the socket, so much initiated. He said, what are you doing here? And when she became very, very shy, he understood. See, shyness is a sign of knowing the desire of wife. Right? If that is Shri Charitra is very important. It has been explained that Devahuti served her husband, without any consideration after she got married with two qualities. Vishrambhena is one, and what is the second one? Gauravena. Eh? Gauravena. Gauravena. Vishrambhena and Gauravena. Vishrambhena means very confidential. And Gauravena means very respectfully fulfilling the desire of it. So intimacy is there. Vishrambhana means intimacy and Gauravena means confidence. These two qualities are very important. If we develop an introduction that how, then we can bet on that family will stay. All right? So, जब कपिल देव, देवहूति और कर्दम मुनि किसी तरह एक दूसरे को पहचान लिया, तो कर्दम मुनि ने दूसरे प्रश्न भी बहुत पूछे थे। तूने अतिथि का सत्कार नहीं किया, इसलिए देर करते हैं, तेरी हालत ये हो गई है। ऐसे उलट पुलट के जो प्रश्न पूछे हैं, तो उसमें स्पष्ट होता है कि they want to come to the conclusion. मैरिज के बाद तो हनीमून हुआ ही नहीं। शादी के बाद तुरंत ले जाना चाहिए, कहाँ? जहाँ हृदय में शांति हो, ऐसी जगह। आजकल कहाँ जाते हैं? यहाँ पर हनीमून के लिए इंडिया से कभी जाएंगे। इंडिया से शादी करते हैं तो बहुत मॉरिशस जाते हैं, तो थाईलैंड जाते हैं, तो नेपाल, तो जाने की जगह है। बहुत गंभीर हो गया।
सारी चीजें याद दिलाने के लिए जो लज्जा आनी चाहिए, तो लज्जा से सबको भी पता चल जाता है कि किस के मन में क्या है। शाइनेस मीन्स लज्जा। कर्दमुनि समझ गए, दिया स्त्री की तो इच्छा होती है प्रजापति करना चाहिए। सर्वप्रथम शादी का तो मतलब ही प्रजापति बनना है। तो ये बाकी रहा है, कोई राह नहीं देखता, और सेटल हो जाएंगे। तब सेटल हो जाए तो क्या क्या परेशानी आती है पता है। शरीर अनुकूल रहता ही नहीं, तो जाते ना करना। 30 साल की लड़की हो गई तो गया काम से। जो शादी की उम्र होती है वो उम्र में शादी करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे आदर्शता का हेतु है। बताएंगे आदर्श क्या है। तो ये जो उदाहरण है उसमें सारी स्पष्टता। तो ये योगी है, इतने बलवान है, देवहूति की इच्छा पूर्ण करने के लिए देवहूति को कहा, देवहूति जा बिंदु सरोवर में। वहां शिव जी के बहुत सारे अनुयायी हैं, तेरी मदद करेंगे, जा स्नान करके आ, तैयार हो गया, वो तुझे तैयार करके तेरा सारा स्वास्थ्य इत्यादि वापस आ जाए। देवहूति गई और तैयार होकर आ गई। फिर से अपने पति की बगल में खड़ी हो गई और नीचे देखने का। कर्दमुनि ने सारी तैयारी कर ली। देवहूति देख, आकाश में मैंने एक बड़ा तैरने वाला एक आइलैंड टापू बनाया, जिसमें बड़ा महल है, आसपास तेरे मन को बहलाने वाली बहुत सारे तालाब हैं, पक्षियां हैं। तो तैयार हो गया, आ गई है और बताया कि तू देख, चलो हम चलते हैं। कर्दमुनि ने देवहूति को सारे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कराई। लोकालोक पर्वत, ऊपर ब्रह्मा जी का निवास इत्यादि सब कुछ बताकर कई दिनों बाद वापस आ गए। You can't understand. So, वो लोग आ गए वापस। उस दरमियान में कर्दमुनि ने अपना नव व्यक्तित्व में विस्तार करके 9 बेटियां पैदा की। आ गए वापस। तो देवहूति में भी चलता हूँ, मैंने जो वचन मांगा था। भगवान आप उतावल क्यों करते हो? ये लड़कियां तो शादी करके अपने अपने घर चली जाएगी, मेरा उद्धार कौन करेगा? मेरा उद्धार कौन करेगा? आज कोई मां नहीं कहती है मेरा उद्धार कौन करेगा? भगवान आपके बेटे के रूप में आना चाहते तो नहीं जानते, इसलिए तो मैंने आपकी शादी कर दी। और कहा कि ठीक है, तेरे जैसी अकलमंद कोई है नहीं, ज्यादातर स्त्रियां बेवकूफ होती हैं। अपना उद्धार करने के लिए अपने बेटे के पास अपेक्षा रखती है, मां का अधिकार हो। आजकल के जमाने में क्या मां भी जानती है? कुछ नहीं जानती। बेटा चाहिए तो क्या करोड़ रुपया आ गए घर में, लड़की आई तो क्या उधार आ गई।
है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मुस्कुरा रही है लेकिन मरना है। The story goes like this, that when Devhuti and Kardamuni were married, and he went into trance, but Devhuti served her husband with very great confidence in her, and two characteristics are very prominent. That is, first is she served very intimately, and that is in meditation, intimacy. It doesn't mean physical intimacy. And with great faith in her husband. She virtually neglected her desires for the time being. But meanwhile, she got initiated. She lost her luster, and the hairs became matted. And when Kardamuni came to know, he was very puzzled that this girl, he never saw her before. So, frankly, he's asking, who are you? And if somebody is married and he's asking his wife, who are you? Huh? You don't remember me. But now, this is what is a real intimacy is. And the response by Devhuti was that she was very shy. She would not talk with another talk to respond to her husband. Only she will scratch the earth with her nail. You know? And saying this, Kardamani knows that she has a very great character. So then he will ask another question. Then he remembers that this is Devhuti and she neglected everything for his meditation. So she is a very cooperative person, like that. So, oh Devhuti, ठीक है, चल, तो यार get ready. You go to Bindu Sarovar and Lord Shiva's assistants will help you, and I'll take you somewhere. Yeah. So he made a big mention on a floating island in the sky that is capable to fly, with great speed. After getting ready, Kardamuni took her and went in the plane, and they traveled all the way to the entire universe, different planetary systems. He showed everything, even Lokaloka mountain and where the demigods come to Nandan Karan for recreation. The demigods were coming with their wives. Kardamuni's capability to show that is more than demigod because he was a devotee. So like that. So there are two great characters that is anticipated, whether one can become very confidential and intimate. Right? And one takes the pride in her husband. So when they returned, they already had 9 children, but all were girls. All right? And Devhuti knew
But Kardamuni wanted to go because children are produced, his job is over. Devaki, I'm going because of my promise was that the Lord said yes. But then Devaki says, my dear Lord, these girls will also go to their homes when get married. But I will be left alone. Who will be delivering me from this Maya? I heard that the Lord wants to come as your son. So please invite him. Let him be my son. And he will guide me. Then you can move. So a readiness towards taking vanaprastha is also there. Yes, is also. But this is how even in modern times, the implementation of the plan, original plan, can be done in Krishna conscious ways. Prabhupada explains in 7th canto, 14th chapter, where Narad Muni instructs to Yudhishthira Maharaj about the tenets of ideal household life from the example of Devaki and Kardamuni. First and foremost is that this is a very act of devotional service that they are going to get married to fulfill the desire of the Lord, to bring the living entities according to their qualification, but they don't have their gross bodies. They are in subtle body form because the day of Brahma just began and Brahma is subsequently giving orders for his sons to become Prajapati and populate the world. Right? The very first thing, every householder members, they should know that this marriage is not made in heaven, but marriage is for going back home, back to Godhead. Not to do any stupid thing of fighting over and, having some kind of misdirected association. Even there are many uneducated, devotionally uneducated, so-called devotees. They don't want to grow, but they want to go in the old habit. Therefore, we have a pernicious problem. And I heard in New Zealand, there is no proper protection to ladies, especially Indian ladies, coming from or the families who are not much conversant to the laws of ideal household life. We got few examples, whom I was talking. So anyway, अपने फिजी में यहाँ आए हुए और कई स्त्रियां हैं, इनको कोई प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलता. Last time, Prabhu, we went, remember, unless and until there is a criminal offense, the ladies will not be protected. So people are very clever. They don't have a relationship within the same house, duly married,
but they don't have a relationship. And then what do? They send the lowest notice to the wife in the same house to evacuate. Nanda Prabhu was very benevolent to rescue one of my disciples. So the point is, it's very important that so-called technicalities in the modern day, law, but it is devoid of Krishna consciousness. How there can be any peace in this world? The peace is disturbed right within the household. But Krishna never designed like that. ये जो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत भारी स्पष्टता नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को करते हैं। जो गवर्नमेंट, राजा यानी गवर्नमेंट, तो इनका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि घर में शांति बनाए रखने में कोई इनका काम लागू होता है। सरकार की जिम्मेदारी, यहाँ तो सरकार भी पति पत्नी में फंस न जाए ऐसे चिंतित रहती है, कभी में पता नहीं है, सरकार भी डरती है। तो कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम जिम्मेदारी शादी भगवान के उपलक्ष्य में होती है। भगवान को ध्यान में रखकर, क्योंकि जब प्रजापति बनना है तो भगवान की ओर की जिम्मेदारी जो ब्रह्मा को मिली है, तो ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा और उसके बाद में मनुष्य पैदा हुए, इनको दी गई। हम कुत्ते बिल्ली जैसे प्रजा पैदा करें तो क्या अपेक्षा रखें? इसलिए जो आदर्श है तो श्रीमद् भागवत में सीखने को मिलता है। कोई ये चर्चा नहीं करेगा, इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। यानी कि बिना जिम्मेदारी प्रजा पैदा करना एक अधम पाप। तो बाद में संसार कैसे चलाए? मारपीट करके संसार चला सकते हैं क्या? गाली गलौज से संसार चला सकते हैं? आदर्श गृहस्थाश्रम, आदर्श क्या है? अंधा गृहस्थाश्रम आदर्श नहीं। दर्श यानी कि देखना, आदर्श के अपने सामने जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जो किसी के हित में नहीं है, तो जिम्मेदारी का प्रश्न ही। शादी करने के बाद जिम्मेदारी वहन करने के लिए भगवान के कानून लागू होते, क्योंकि ये जीव भगवान का है, जिसको हमने प्रजा पैदा करने के लिए शरीर दिया है। जिम्मेदार हमें भी रहना पड़ता है। ये जिम्मेदारी निभाने की तैयारी नहीं है तो फायदा क्या है? भक्ति के नियम में तो समझ में आता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं, दीक्षित है, तो अपेक्षा भी रखते हैं कि हम आदर्श जीवन जिए। पर जो आदर्श नहीं, ऐसे संघ की आवश्यकता क्या है?
जो अपने जीवन में कोई ये भी नहीं लाएगा, शांति या सुख भी नहीं ला सकता, ऐसे ऐसे समाज या ऐसे मित्रता की भी आवश्यकता है। असत संग छाड़िए वैष्णव राज। जो असत है, जिनके जीवन में सत का कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसा संग छोड़ना चाहिए। भगवान की प्रति के लिए हमें बच्चे भी पैदा करने होते, क्योंकि अंश तो भगवान का है, हमारा नहीं। माँ शरीर देती है तो इसलिए क्या बेटा उसका हो जाएगा? तो 1 महीने के बाद भगवान को दर्शन कराने के लिए पहले मंदिर में जाते हैं, बाहर निकालते हैं। क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन करा, भगवान के सामने रख देते हैं, भगवान आपका बेटा। बाद में क्या? बाप के मेरा बेटा, माँ के मेरा बेटा। परेशानी परेशानी पैदा कर रहे। सर्वप्रथम ये भगवान के उपलक्ष्य में होता है। The second important thing is that what is the desire of the Lord in procreation? The Lord wants to give opportunity for the humankind that he is receiving the body in the image of the Lord. So therefore, he should have equal opportunity to be educated about the Lord and his desire and how he designed this process. Not to abuse the process, but perform this process with all the sanskaras. The lifelong 16 sanskaras are there. पंडित को बुलाओ, संस्कार कर देगा, हम तो कुछ जानते नहीं। पंडित भी कुछ अगड़म बगड़म करेगा, हो गया, दक्षिणा लेकर चला जाएगा, लेकिन उद्धार का तो कोई नाम ही नहीं। ऐसा नहीं कि 250 साल पहले पूर्वज हमारे फिजी में आए हैं, इसलिए कालांतर हम सब भूल गए और हमारी भावना तो हिंदू रही, लेकिन मान्यता नहीं, लेकिन जीवन में उतरी नहीं। परदेश है, परदेशी वातावरण छा जाता है, अपनी जो सारी औकात है भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में भी वही हाल है, इंडिया में भी वही हाल है। हम परदेशी अनुकरण कर रहे हैं, पर इंडिया का हाल भी परदेश जैसा ही होगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये है, हम दो दिन पहले ही हमने एक सर्वे देखा, सबसे ज्यादा लग्न विच्छेद यानी कि डिवोर्स कहाँ होते हैं? इंडिया में। Where? इंडिया। No. 85% are divorced in Europe, Norway. Then Switzerland, and decreasing, about 35 to 40% in USA. But India में 1% बताया है।
पॉपुलेशन बढ़िया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। लेकिन इससे क्या फायदा? क्या हम जो उद्देश्य है प्रजापति बनने का, जो अधिकार हम अपने बच्चों को भी देते हैं, लेकिन हम क्या ये भौतिक जंजाल में छूटने का जो कर्तव्य है उसे हम कर पाते हैं? वहां हम परदेशी अनुकरण करते हैं। It is quite contemporary, this the survey of how many, what is the success of marriage depends upon how many divorces are happening. So Norway comes first, 85% divorce. Then Sweden, Switzerland, big 65, I think 54% was in USA, not 35, 54%. But Indians in USA, their divorce rate is so big. And the devotees in his court has a big divorce. Because India is rural. They accept in simplicity whatever the kind of their life is. So that constitutes higher rate of success. But it doesn't mean that they are able to make their life straightforward to go back home back to Godhead. Rural, 85% people are still living, and they are very simple, not complicated. जो परेशानी है तो वो तो this is troublesome, this is only in the cities and other urban areas, not in the rural area. So that is the case. So in any rate, our business is to go for the second important function, to convey the Lord's desire. The head of the household, generally it is the husband. He has to act with the direction of his guru. Because the guru has only one relationship, that they have to go back home back to God, his student. So therefore, as far as most of the gurus are bombarded with their household affairs. That is a fact. When people call us, invite us in the marriage ceremony, we hardly go. Because we know we will be needed when they want to break up. At that time, we have a good way to beat them up, both husband and wife, so-called. If they are my disciples, I will not spare them. I will not spare them. Because it is important. By hook or crook, you have to make this life successful. ये जो है वैष्णव लग्न पद्धति, जो शादी इत्यादि कैसे करनी है, भगवान को उपलक्ष्य में करनी। और मजे की बात तो वो है कि हम
ये विधियां जानते हैं कि उस दिन वन राजा होता है, उसका सम्मान विष्णु भगवान की तरफ किया जाता है, और जो बहू है उसको लक्ष्मी बनाते हैं। और जैसे एक दिन भगवान का, बाकी हमारा, एक दिन के लिए भगवान की उपमा ले लो। The Indian marriage is really geared in not faking out, but respectfully conducted, where the groom is supposed to be the representative of Lord Vishnu, and the bride is representative of Lakshmi, and they are both worshipped by in-laws. सासू माँ को आरती उतारनी होती है, पर राजा जब आते उतारी थी ना आपकी, अभी आप सबकी आरती उतार रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। क्या विष्णु होता है, एक दिन की पूजा होती है, एक दिन की पूजा होती है। लड़की बता, the system is completely corrupted. You know, invoke the Lord on the first day, and next day, अरे बाबा, इनके जूते की भी चोरी करके आते हैं, ऐसे घर जमाई बनाने की बात है क्या? They don't want to let him. ऐसे हंसी मजाक में सारा ले लेते हैं. They take as a joke. They find innovative method. अभी तो संगीत पार्टी होती है. अरे मैं भी हैरान हो गया. हमारे कई डिसाइपल और गुरु भाई के बच्चों की शादी में महाराज जाओ, तो संगीत भी भक्त लोग करेंगे, अरे स्टाइल से करेंगे, तंबूरा लेकर करेंगे, तो ये राधिका watch out. Yeah, बुरी हालत होगी. I mean, they want to take prestige in getting the children married in his own way. He's gone. He's gone. Prabhupada got devotees married when there was nobody to take care of. But so simple, but so sublime. And sometimes it is laughable joke also. And then Prabhupada crashed. In 1974, Prabhupada conducted, I think, the first marriage ceremony in Los Angeles temple. And the bride and groom, they were married in a simple way, invoking all our parampara mantras. And Prabhupada conducted the fire sacrifice also. All right. So after the marriage is over, they circumambulated 7 times, as if they are going to be again coming for another botheration. That's the desire they have. 7 फेरा भरो तो 7 जन्म में यही पति मिलेंगे. अब एक जन्म का ठिकाना नहीं तो 7 जन्म. This system is like that they have to circumambulate the fire sacrifice, 7 times, calculating 1 lifetime at each circumambulation. So 7 lifetimes they want to remain husband and wife, very faithful. But on the second day, tamasha chalu ho gaya.
So Prabhupada got them married, and the groom came and offered his obeisances. Srila Prabhupada, now I am a householder. Please tell me what is my duty. Prabhupada told, tell your wife to cook prasadam and offer to Lord. Then you go out and yell, is there anybody hungry? Not loudly. Is there anybody hungry? Please come and take prasadam. You offer them prasadam if anybody comes, and then you feed your children, elderly, and then both husband and wife, at last you take prasadam. The boy said, is there it? Please tell me, is there anything special that now I can perform some duty? And Prabhupada repeated for 3 times the same thing. Food for life is the most important thing. In this 6 or 7 steps that are very important, will come together. Because one of that important step is that because the householder is the provider for all living entities, not only his family members, but even a rat, even a cockroach. यहाँ है, आप पता है? कहाँ गई? Prabhupada said, we had a problem when we purchased in 340 West Capital Street near of temple, because it was, there was a restaurant and there was an oil trap in the name. So from that trap, so many rats, big rats, and roaches, and as a festival coming. The devotees asked, Prabhupada, how can we get rid of them? You want to get rid of them? Well, then why do you invite them? Prabhupada said, why do you invite them? You invite the guests, come. And then you want to kill them? That's not good. Better keep it clean so that they will not come. That will be best. So, Prabhupada was very simple but very direct towards, honoring every life. Sarvabhuta hite rata. So, a householder is supposed to provide for all living entities in his surroundings. They should not go hungry. They have to feed the birds, the beasts alike. Even a snake, if he is staying in your muddy house, don't kill him. He may go away like that. So, that important thing as a Prajapati, he has to respect other Prajas also. He is not a Prajapati only for your Praja. ये एक महत्व का अंग है. जब प्रजापति बनते हैं तो अपने आसपास अपने घर में रहने वाले सारे जीव को सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन के सारे जो उसका जो कोटा है इनको देना चाहिए. हम तो एक पक्षी को दाना दे देते हैं और इतना ही नहीं, नहीं तो कुत्ता रोटी भी चुरा जाता है क्योंकि इसको गैया की रोटी पहले निकालते हैं. यहाँ तो गैया होती तो रेंच में होती, वहाँ रोटी खिलाने कौन जाए. पहली रोटी गैया की.
और जो जली रोटी कुत्ते की, बीच वाली रोटी हमारी, ऐसी गिनती करते हैं लोग। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि प्रजापति हमें कहते हैं सारी प्रजा उसकी प्रजा पर, जो जीव हैं, जो आए हैं संसार में, वो सारी उसकी प्रजा के का, या उनके संरक्षण में जो रहती है तो उसका धर्म है सभी जीवों की रक्षा करना और पोषण करना। It is the duty. हाँ, जो तीसरा महत्व का जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Just hear the third law. This was, I think, fifth or sixth law. So 3 days we studied, like that. But the third one is very important to understand. You are the head of the household. So you have taken all the responsibility for providing all the necessities, education, then health, then daily necessities, everything. And you make sure that there is no shortage. All right? You make sure that everybody is happy by this provision. But you remain detached. Don't you ever claim that I'm doing it. I'm doing on behalf of the Lord. So therefore the guidance of Guru will be fine. वो चुपचाप करते रहो, कहो क्या सेवा करो, पूछो, वो तो चुप रहेगी, परेशान नहीं करेगी, जो लाते हैं। But you have to become detached. The head of the household cannot afford to get entangled in the household activities. है ना, जबरदस्त है। हमें अनासक्त भाव से ये सारा काम करना है। जो गृहस्थ है ना, घरे स्थिर इति गृहस्थ, घरे स्थिर, नहीं तो गृह में भी कहा है। जो 4 दीवारों में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीता है तो गृह में भी बन जाएगा। ये तो गृहस्थ है, स्थिर किसमें? भगवान की बुद्धि में स्थिर है, तो गृहस्थ कहना। आदर्श गृहस्थाश्रम में गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है। One who is situated in the household, yet he is detached, that nothing belongs in his own possession. How Sudama was detached. Even after Krishna fulfilled his wife's desire, Sudama still remained detached. So, हम तो कहते हैं कि ये तो जायदाद मेरी है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर पे भी आ सकती है। Prabhupada said, if somebody has so much attachment to his property, surely he will become a pitfall on his house, or he will become a twiner which will be covering and enveloping. There's so much attachment. What is that? So, under the direct care and intervention of the spiritual master, the household should become detached. Then and then his Grihastha ashram is going to be successful. That's why the ideal example is of karma. Now you got it.
हाँ? आदर्श कर्दमुनि क्यों है? क्योंकि ये गृहस्थाश्रम चलाया, सब कुछ दिया, विरक्त हो गए। हम तो घर में ही मरना चाहते हैं। हाँ? भगवान का नाम लेने में भी हमें फुर्सत नहीं तो इच्छा भी नहीं होती। हाँ? चलो माला कितनी करोगे? उसके हाथ करोगे, माला करेंगे, सबको माला करनी चाहिए ना, क्योंकि वो भगवान की याद दिलाए, भगवान के तरफ से हम जो जिम्मेदारी अदा करने के तैयार है, तो अवश्य करो। How many people are chanting Hare Krishna Mama? Praise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Those who are not chanting, please do it. Because you have been given a very precious time. Just it belongs to Him. Therefore, we have to be faithful to Him. जीव भगवान का अंश है, किसी और का नहीं है। भगवान का अंश भगवान के पास ही होना चाहिए, तो भगवान के लिए हमें जीने की आवश्यकता होती है, तभी हमारे सारी परेशानियां इत्यादि दूर हो जाएंगी। आप यहाँ हैं, कितने सद्भाग्य से भगवान की महिमा, इनके नाम की महिमा, यह आदर्श गृहस्थाश्रम का इनका विषय है, सिर्फ मजाक के लिए नहीं है, अपना जीवन सफल बनाने के, क्योंकि हम सब पुत्र, पिता, मातृ, पितृ और दुहितृ इत्यादि त्र शब्द से जुड़े हैं। त्र मीन्स प्राणाय, प्राणाय यानी भवसागर पार करने का, जो कहीं से त्राण कहते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो हमारे घर में धर्म क्यों, धर्म का पालन क्यों, भगवान विरोधी क्यों है? भगवान जो कहते हैं वो क्यों नहीं करते? हम कैसे हिंदू रह पाएंगे? हम कैसे भक्त बन पाएंगे? भक्त बनने का एक ही तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे राम जो कुछ संकोच है उसे साइड पर रखकर हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई हो गए तो कह रहे हैं कि बंद करो। त्र यानी के त्राण करना, उद्धार करना, परित्राण। तो पिता यदि पुत्र का परित्राण करने के लिए बेटे को लाते हैं और उसके उचित कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं करता तो पिता बनना भी बेकार। मातृ वो भी त्राण करने के लिए पहली माता पहली गुरु बनती है। हाँ, किसके बारे में गुरु बनेगी? भगवान के बारे में ही गुरु का प्रावधान होता है, किसी और चीज के लिए गुरु नहीं होते। भौतिक ज्ञान के लिए कोई गुरु की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी हम तो गुरु मान लेते हैं इनको। ये बहुत आवश्यक है। जब हम त्र से जुड़े हैं, हमारा संबोधन पवित्र, पवित्र यानी पवि नाम का नरक है, उसमें से त्राण करना हर एक जीव की आपस में जिम्मेदारी है। हर एक घर में, हर एक बच्चे की भी जिम्मेदारी। यदि
पिता बच्चों का त्राण नहीं कर रहा है, कर पाया है, तो पुत्र की जिम्मेदारी होती कि पिता का त्राण कर, क्योंकि संबंध तो त्राण का, ऐसा नहीं कि लड़कियां त्राण नहीं कर सकती, वो भी दोहित्र है, पुत्री है, सभी त्राण से ही तो जुड़े हैं। त्राण ही एकमात्र हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी आदर्श गृहस्थाश्रम की समझ सफल होगी। कहीं से भी हम अभी से भी चालू कर सकते हैं, उसमें उम्र का कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के साथ कोई भेदभाव मत रखो, भगवान का नाम लो, देवताओं के नाम से पवित्र यानी त्राण नहीं होता, वो तो भौतिक इच्छा ही पूरी करते हैं, लेकिन त्राण करना बाकी रहता है। यानी 7 जन्म का फेरा भी आप कर पाओगे कलयुग में? It's not possible. Kali is so difficult, that we mutually are connected within the family for deliverance of each other. The father has a responsibility to deliver his child, not from the womb of mother only, but also from the life of death. He should liberate him. If father cannot teach, the child has the responsibility to liberate his fathers. By performing pure devotional service, one is able to deliver 21 generations of the parenthood. जिन माँ बाप से जन्म लिया है, सबका 21 पीढ़ी का, पीढ़ी यानी not only one, जिसके ऐसा संबंध, पर जीव तो कहीं से भी आता है। पहले जन्म में कौन से माँ बाप थे? इस जन्म में आप कितने नंबर के माँ बाप बने? You know the Chitraketu's son story? The infant son suddenly died because of jealousy of other wives of Chitraketu. All right? So Narad Muni and Angira Muni both told Chitraketu, saying, even if you have a son in your life, अपनी ये गाड़ी है कोई छेड़ने गया लगता है। हो गया तो ये भी काम मानता था। तो चित्रकेतु का बच्चा इनके माँ बाप का सुख और दुख दोनों का कारण बने, ऐसा नारद मुनि ने चित्रकूट को कहा था। लेकिन बच्चा है मेरे जीवन में, ओह किसी भी प्रकार से हम हासिल करेंगे। बच्चा हुआ तो जिस माँ ने बच्चे का जन्म दिया, दूसरी रानी चित्र वो सब ईर्षालु हो गए, दूसरे ही दिन जहर पिला के मार दिया, तो फिर से शोक छा गए। और नारद मुनि आए कि देखो हमने कहा था ये बच्चा तेरे सुख का भी कारण है और दुख का भी कारण। ऐसे तो कैसे होता है, चलो बताओ। तो नारद मुनि कह के देखो मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए तुझे समझाएगा। तो बच्चा को जीवित किया और कहा लो तुम्हारा बच्चा जीवित हो गया।
लेकिन बच्चा चित्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये एकाएक क्या बदलाव आ गया? चित्रकेतु से लाड प्यार से बुलाने लगा तो मेरा बेटा है। तो बच्चे ने कहा तुम कितने नंबर के पिता हो गए? कितने नंबर के पिता हो? मैंने तो पिछले जन्म में शायद मेरे पिता होंगे, तो उससे पहले तो मैंने बहुत सारे पिता ग्रहण किए। तुम्हारा नंबर कौन सा है मुझे बता। सिर्फ परीक्षण के लिए हम बच्चों को भी अपना मानने लगते। अपना यानी मेरा है, पोजेशन। स्त्रियों पुंसां मैथुनी भावम एतत् तयो हृदय ग्रंथि आहुस तत्र अतः गृह क्षेत्र आप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयम् अहम् अभि। श्रीमद् भागवत तो रोकड़ा तमाशा मारता है। सिर्फ मैथुनी भाव सारा खेल खत्म। ये तो जिम्मेदारी का काम है, मैथुन भाव का काम नहीं। पुत्र पैदा करने की घटना, ओह क्या क्या परेशानी आने लगी है कलयुग में। आईवीएफ कराओ। कितने लाखों का खर्च, और उसमें भी नंबर नहीं है। तो सरोगेट मदर को बुलाओ। ये सब तमाशा है पैसे बनाने का। कलयुग सत्यानाश। This modern ways of begetting children, they don't understand that you are given a time limit. So anyway, to beget a child is not a very courageous act. Rather, it's a difficult situation. But our ignorance about our responsibility brings more difficulty than, if we follow the rules and regulations of ideal Grihastha Ashram, then there is no hope otherwise. So anybody has any question, don't. अब हम मजाक लेंगे आप लोग। बोलो क्वेश्चन क्या है? Maharaj, if you can summarize few points regarding the No. You read 7 times proposition. Right. This ideal Grihastha versus women's liberation. How we view it. Oh my God. Kunti was, liberated. Devavati was liberated. So, only ideal Grihastha's wife can be liberated. Okay? Rest, forget it. Yeah. No, that's a talk going on everywhere. No, women's liberation, equal rights, women's liberation. Oh, that is something else. That is not liberation. It's becoming more condition. The term liberation is not appropriate for them. They think that they are liberated, but getting into more entanglement of it. Of course, that liberation is exploitation by few men.
Anyone else? So all have become ideal Grihastha now. Yeah? Everyone has become ideal Grihastha. Just for a moment. क्या पहुंचने तो बाद में बात करेंगे. Is there any repercussion for husband when they abandon? Any repercussion when इसमें बोलो जरा. Very good. Listen to press water? I'll speak louder. Asking any repercussions for husbands who abandon their wife, like the example you have told us. I mean, she doesn't want to keep that kind of husband out. Liberate him. That's called liberation. No, ideal wife will accompany, leave the house, just like Gandhari did with Rashtra. They did tapasya together and probably fire of their austerity, they consumed their body. Gandhari was a sati. Yes. I think I took the word which you explained very well, of Tran. I think that should be the foundation of anything we does that. Tran, when you explain what the meaning of Tran. The moment we engage in spending situation with this foundation block, I think that is to take care of a lot of That is the real crux. But the word itself denotes very important, function. दादागिरी से त्राण करें, पिता अपनी दादागिरी करें, माता अपनी दादागिरी करें, बच्चे अपनी दादागिरी करें, तो पुत्र है पुत्र है, त्राण कहाँ किसका त्राण करें? जो खुद का नहीं कर पाते, तो दूसरों को क्या करें? त्राण means liberation. Everybody wants to get liberated from physical point of view. They want to be independent. Nobody should peek their dirty nose in my business. Mind your own business, get out of the house. That is not vairagya. That is self-gratification to the maximum, that you don't want their guidance. They don't want to let their parents interfere with them. There is no necessity. Hence, it's Kali Yuga going to hell. The sensible thing is to follow and Krishna consciously, that will resolve all the problems. Maharaj is not. So did I get it wrong? Tran, I thought Pavitran means Pavitru ka uddar kar raksha. So it's in the word. What I took the meaning of Tran was Tran is liberated. Paritrana is sadhana. Krishna comes, establishes religion for deliverance of those who are devoted. Sadhana. Vinashaya cha dushkritam. Liberate from the bodily conception of life, and the devotees will be liberated. They will not come back into this miserable material world. Why should they come? Unless you want to take responsibility to preach, come again, over and over again. That's okay. Maharaj, so you know how you said couples, like when they get married, they have to stay together for 7 lifetimes. What if they break up? Do they still have to stay for 7 lifetimes? No, 7 minutes. Then 7 minutes. Even through their 7 lifetimes and they get married. No, it is just good wishes
They are trying to express in front of the Lord on the form of fire sacrifice. Don't worry. Don't worry, don't get married. There's too much for him. One lakh is. आजकल के बच्चे जिम्मेदार नहीं रहना चाहते तो देखेंगे कोई तो पीछे पड़ेगा. Yes, How is it true that a wife shares 50% of the husband's lives, good deeds or whatever? Is it true? what is that one? Ardhanagini, 50% wife. Yeah. Oh my God. Any husband does any good activity, the wife gets 50%. How far that is true? That is how we are spiritually elevated people, not like donkeys. Spiritually elevated, they have multiple benefits. Okay? What does it make any difference to a donkey? If they can 50% good deeds, what about his bad deeds? Are we going to share that as well? No. Well, modern ways of appreciating each other. You know. Swami Vara was Sansuti, Narakashu, Yat Karna Pato Peto, Japanam Gana. People who are like Swami's dog, hog, and camel, and asses. They glorify each other, even though in the form of husband and wife, or friends, all that relationship. But that glorification is like croaking of the frogs, inviting their own death. Because they never heard or on their eardrum, there were no vibrations of the holy name of Krishna. It is called Grihastha. We have to be careful. Life is not a joke. And in Kali Yuga and Corona time, it has never been a joke. But people are not coming to their senses. They think they will get immunity from Corona. So they made injections. I took 4 injections. 2 were booster doses to me. So from coronavirus, the first one, it was okay. But recently, just in the month of April, I was undergoing the dental treatment and I caught up with corona, the new trend. And the doctor said, sorry, you are corona positive, we can't treat you. You go to quarantine and then bring your negative results and then we'll treat you. And Baba, I thought that corona works in the hospital itself. And the hospital is denying me treatment. This is the joke. What kind of immunity would we have? But the best immunity is to remain and strictly adhering to the spiritual master who is going back home to Godhead. And we have to try that. Once and all, get rid of this entanglement. Why do you need to make many rounds repeatedly in this hellish material world? Next year is not going to be better than Kali Yuga.
I lost so many devotees and friends. And every day I'm getting bad news. I don't know when I will stop hearing bad news. Only when I disappear. Oh, Krishna. Yeah, it is a fact. Yeah, Srila Prabhupada ki. He's one as Veda Swami.